Introduction to research methodology, motivation, objectives, and research process. Introduction. Research methodology is a systematic and scientific approach to investigating problems, discovering new knowledge, and verifying existing theories. It provides a structured framework for conducting research in a logical and organized manner. The effectiveness of any research largely depends on the researcher's motivation, clarity of objectives, and understanding of the research process. Among these, motivation plays a crucial role as it drives the researcher to initiate, continue, and successfully complete the research work despite challenges. Motivation for research. Motivation refers to the internal or external factors that inspire a researcher to undertake and pursue research activities. It is the driving force that sustains interest and commitment throughout the research process. A motivated researcher is more likely to engage deeply with the subject, explore innovative ideas, and contribute meaningful knowledge to the field. Motivation is essential in research for several reasons. First, it helps the researcher to select meaningful and relevant research topics. A motivated researcher chooses topics that are not only interesting, but also significant for society or a particular field of study. Secondly, motivation ensures persistence. Research often involves challenges, such as lack of data, limited resources, or unexpected obstacles. A motivated researcher remains committed and continues working despite these difficulties. Another important aspect is innovation. Motivation encourages creative thinking and helps researchers develop new ideas, methods, and approaches. This leads to original contributions and advancements in knowledge. Motivation also strengthens ethical commitment. Researchers who are genuinely motivated are more likely to maintain honesty, integrity, and accuracy in their work. They avoid unethical practices such as plagiarism or data manipulation and ensure the credibility of their research. Objectives of research. The objectives of research refer to the specific goals that a researcher aims to achieve through the study. They guide the direction of research and help in focusing efforts on relevant aspects. The primary objectives of research include discovering new facts, verifying existing theories, and establishing causal relationships among variables. Research also aims at developing new tools, techniques, and procedures to solve complex problems. Furthermore, research contributes to improving existing systems and plays an important role in policy formulation and decision-making in various fields such as education, science, and social sciences. Types of research objectives. Research objectives can be broadly classified into general objectives and specific objectives. General objectives, broad goals. General objectives describe the overall aim or broad purpose of the research. They provide a general direction and define what the researcher intends to achieve at a macro level. For example, a general objective may be to study the impact of online learning on student performance. This objective gives a broad idea of the research focus, but does not specify the exact aspect to be studied. Specific objectives, focused goals. Specific objectives break down the general objective into smaller, measurable, and achievable components. They provide clarity and help in systematic data collection and analysis. For example, specific objectives related to the above general objective may include to compare the performance of students attending live sessions and recorded lectures, to analyze student engagement levels in virtual classrooms,
to evaluate teachers' perceptions of online teaching tools. These objectives are precise and help in systematic data collection and analysis. Research process. The research process refers to the series of steps followed by a researcher to conduct a study in a systematic manner. It begins with the identification of a research problem, followed by a review of existing literature to understand previous work in the area. The researcher then formulates objectives and hypotheses based on the problem. The next steps include research design, where methods and techniques are selected, and data collection, which involves gathering relevant information. This is followed by data analysis and interpretation, where findings are examined and conclusions are drawn. Finally, the research is presented in the form of a report or thesis, contributing to the existing body of knowledge. Conclusion. In conclusion, research methodology provides a structured approach to conducting scientific investigations. Motivation plays a vital role in sustaining interest, ensuring persistence, fostering innovation, and maintaining ethical standards. Clearly defined objectives guide the research process, while the systematic execution of research steps ensures reliable and meaningful results. Together, motivation, objectives, and process form the foundation of successful research. Introduction to Research Methodology, Motivation, Objectives, and Research Process. Research methodology का तारुफ, motivation, objectives और research process. Introduction. तारुफ. Research methodology एक मुनज़्ज़म और scientific approach है, जिसके ज़रिए मसाइल की तहक़ीक़, नई knowledge की दरियाफ़्त और मौजूदा theories की verification की जाती है। ये रिसर्च को लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में अंजाम देने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फराहम करती है। किसी भी रिसर्च की कामयाबी बड़ी हद तक रिसर्चर की मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव्स की वजाहत और रिसर्च प्रोसेस की समझ पर मुनहसिर है। इन तमाम अनासिर में मोटिवेशन का किरदार निहायत अहम है, क्योंकि यही वो क़ुव्वत है जो रिसर्चर को रिसर्च वर्क शुरू करने, जारी रखने और मुश्किलात के बावजूद मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक रखती है। मोटिवेशन फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए मोटिवेशन। मोटिवेशन से मुराद वो इंटरनल या एक्सटर्नल अवामिल है जो रिसर्चर को रिसर्च एक्टिविटीज़ शुरू करने और जारी रखने के लिए मुतासिर करते हैं। ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान दिलचस्पी और कमिटमेंट को बरकरार रखती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन रिसर्च। रिसर्च में मोटिवेशन की अहमियत। मोटिवेशन रिसर्च में कई हवालों से ज़रूरी है। सबसे पहले ये रिसर्चर को मीनिंगफुल और रेलेवेंट रिसर्च टॉपिक्स के इंतखाब में मदद देती है। एक मोटिवेटेड रिसर्चर मौजू के साथ गहराई से जुड़ता है, इनोवेटिव आइडियाज़ तलाश करता है और फील्ड में मीनिंगफुल नॉलेज का इजाफा करता है। मोटिवेशन परसिस्टेंस को यकीनी बनाती है। रिसर्च के दौरान अक्सर चैलेंजेस सामने आते हैं, जैसे डेटा की कमी, लिमिटेड रिसोर्सेज या अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स। एक मोटिवेटेड रिसर्चर इन मुश्किलात के बावजूद अपने काम को जारी रखता है। एक और अहम पहलू इनोवेशन है। मोटिवेशन क्रिएटिव थिंकिंग को फ़रोग़ देती है और रिसर्चर्स को नए आइडियाज़, मेथड्स और अप्रोचेस तैयार करने में मदद देती है। इसके नतीजे में ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस और नॉलेज में तरक्की होती है। मोटिवेशन एथिकल कमिटमेंट को भी मजबूत करती है। जो रिसर्चर्स हकीकी तौर पर मोटिवेटेड होते हैं, वो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी को बरकरार रखते हैं। वो प्लेजरिज्म या डेटा मैनिपुलेशन जैसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचते हैं और अपनी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को यकीनी बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के मकासद। ऑब्जेक्टिव्स।
रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स से मुराद वो स्पेसिफिक गोल्स हैं जिन्हें रिसर्चर अपनी स्टडी के ज़रिए हासिल करना चाहता है। ये ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च की सिमत मुतय्यन करते हैं और रेलेवेंट पहलुओं पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद देते हैं। रिसर्च का मकसद नए टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स तैयार करना भी होता है ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। मजीद बरां, रिसर्च मौजूदा सिस्टम्स को बेहतर बनाने में मदद करती है और एजुकेशन, साइंस और सोशल साइंसेज जैसे शोबों में पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग में अहम किरदार अदा करती है। टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की अक़साम। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को उमूमी तौर पर दो अक़साम में तकसीम किया जाता है: जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ब्रॉड गोल्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च के ओवरऑल एम या ब्रॉड पर्पस को बयान करते हैं। ये रिसर्च को उमूमी सिमत फराहम करते हैं और मैक्रो लेवल पर रिसर्चर के मकसद को वाज़ेह करते हैं। मिसाल के तौर पर, ऑनलाइन लर्निंग के स्टूडेंट परफॉर्मेंस पर असरात का मुतालिया करना। ये ऑब्जेक्टिव रिसर्च के फोकस का उमूमी अंदाज़ा देता है मगर तफसीलात फराहम नहीं करता। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फोकस्ड गोल्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जनरल ऑब्जेक्टिव को छोटे, मेजरेबल और अचीवेबल हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये वजाहत फराहम करते हैं और सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर, लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में शिरकत करने वाले तलबा की परफॉर्मेंस का मुआजना करना। वर्चुअल क्लासरूम्स में स्टूडेंट एंगेजमेंट का तज्जिया करना। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स के बारे में टीचर्स की परसेप्शंस का जायज़ा लेना। ये ऑब्जेक्टिव्स वाज़ेह और स्पेसिफिक होते हैं और सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में मदद देते हैं। रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस इन मराहिल का मजमूआ है जिन्हें रिसर्चर एक स्टडी को सिस्टमैटिक अंदाज में मुकम्मल करने के लिए इख्तियार करता है। ये रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है, जिसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया जाता है ताकि मुताल्लिका मौजू पर पहले से मौजूद काम को समझा जा सके। इसके बाद रिसर्चर ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस तश्कील देता है। अगले मराहिल में रिसर्च डिज़ाइन शामिल होता है, जिसमें मेथड्स और टेक्निक्स का इंतखाब किया जाता है और डेटा कलेक्शन किया जाता है, जिसमें रेलेवेंट मालूमात जमा की जाती है। इसके बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की जाती है, जहां नताइज का जायज़ा लेकर कंक्लूजन्स अख्ज़ किए जाते हैं। आखिर में रिसर्च को रिपोर्ट या थीसिस की शक्ल में पेश किया जाता है, जो मौजूदा नॉलेज में इजाफा करता है। कंक्लूजन, नतीजा। आखिर में रिसर्च मेथोडोलॉजी साइंटिफिक तहकीक के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फराहम करती है। मोटिवेशन तहकीक में दिलचस्पी बरकरार रखने, परसिस्टेंस को यकीनी बनाने, इनोवेशन को फ़रोग़ देने और एथिकल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। वाज़ेह ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च की सिमत मुतय्यन करते हैं, जबकि रिसर्च प्रोसेस के मुनज़्ज़म मराहिल रिलायबल और मीनिंगफुल नताइज फराहम करते हैं। इस तरह मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस मिलकर कामयाब रिसर्च की बुनियाद बनते हैं।